electrons in metal, the indivisible particle having half warped integral spin, quantum number, and obeying Pauli exclusion principle are called the fermions or Fermi particle. These particles obey the Fermi-Dirac static, and assembly of Fermi particle is called the Fermi-Dirac gas, or simply Fermi gas. Aggregation of free electrons in the metal. In the typically example of the Fermi gas, consider a Fermi gas field in the consider of volume V and having n Fermi particle at the temperature T. These particles are distributed in various energy state such that n1 particle occupy energy epsilon 1, n2 particle the energy epsilon 2, and so on. According to Fermi-Dirac distribution law, the number of particles in the ith energy state of the energy epsilon suffix में I is given by ni n suffix में I is equal to g suffix में I बटा के e के खाते अल्फा प्लस बीटा epsilon suffix में I प्लस 1 इक्वल टू g suffix में I बटा के 1 बटा के a e के खाते बीटा suffix में I प्लस 1. Equation number 1, where beta is equal to k by t is equal to, and alpha can be both positive or negative value. Since the number of particles is very large and the volume is small, we can assume that the difference in the energy state is negligible, small, and the distribution of the energy may be regarded continuous, quasi-continuous. Under this condition, we can replace g suffix by the number of the cell is the energy interval epsilon to epsilon plus this epsilon by g of epsilon d epsilon, where g of epsilon is the density of the stage and energy epsilon, and is given by g of epsilon d epsilon is equal to g suffix में s 4 pi v बटा के h q 2 m epsilon m बटा के 2 epsilon के खाते 1 by 2 d epsilon, where g suffix में s is the spin density factor for the spin quantum number s, and given by g suffix में s equal to 2s plus 1. 3 Fermi distribution function. The Fermi distribution function also may also be expressed as f epsilon equal to n of epsilon बटा के g epsilon equal to 1 बटा के e खाते अल्फा प्लस बीटा epsilon बटा के t प्लस 1 epsilon equal to 1 बटा के e खाते epsilon माइनस e suffix में f क्वेश्चन में बटा के t प्लस 1, where we have written alpha is equal to minus e suffix में f of t बटा के kt. समीकरण 5, where e suffix में f of t is called the Fermi energy of the temperature T at t is equal to 0 k of epsilon is equal to 1, where epsilon less than e suffix में f of 0. समीकरण नंबर 6 is equal to 0 when epsilon is greater than e suffix में f of 0. This fact has been illustrated in the figure 8. At any other temperature f of epsilon is equal to 1 by 2 when epsilon is equal to e suffix में f. Thus the Fermi energy is the energy of the fermions, and which the distribution function acquires a value 1 by 2 at 0 k temperature. For 0 is less than epsilon is less than e suffix में f, the value of Fermi distribution function is the unity of epsilon is greater than e suffix में f. Its value becomes 0. Thus Fermi energy is maximum volume of that the fermions can be acquired at 0 temperature. The number of particles in the energy range from epsilon to epsilon plus d epsilon as temperature T is d n epsilon is equal to f epsilon g of epsilon d epsilon d n epsilon is equal to g suffix में s into 4 pi m v बटा के h q into अंडर रूट में 2 m epsilon बटा के e खाते epsilon माइनस e suffix में s बटा के kt plus 1. इक्वेशन 7, where g suffix में s equal to 2s plus 1 in the spin degeneracy factor. Total number of particle will be n is equal to समाकलन d n epsilon is equal to g suffix में s 4 pi m v बटा के h q अंडर रूट में 2 m 0 to epsilon के खाते 1 by 2 d epsilon बटा के e खाते अल्फा प्लस epsilon बटा के kt plus 1 8. And the total energy of the Fermi gas is equal to समाकलन epsilon d n of epsilon is equal to gs 4 pi m v बटा h q अंडर रूट में 2 m 0 to infinity epsilon खाते 1 by 2 d epsilon बटा के e खाते अल्फा प्लस epsilon बटा के kt plus 1. Now let x is equal to epsilon बटा के kt, therefore d epsilon is equal to k dt dx. Then n is equal to g suffix में s v बटा के h q क्वेश्चन में 2 pi m kt खाते 3 बटा 2 2 बटा के अंडर रूट में पाई 0 to infinity s खाते 1 by 2 dx बटा के e खाते अल्फा प्लस x प्लस 1 इक्वल टू जी सफिक्स में इक्वल टू v बटा एच क्यू क्वेश्चन में 2 पाई m kt खाते 3 बटा 2 f1 ऑफ अल्फा
10 वेयर f1 ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 बटा अंडर रूट में पाई 0 टू इन्फिनिटी एक्स खाते 1/2 डी एक्स बटा ई खाते अल्फा प्लस एक्स प्लस 1 11 इक्वल टू 3 बटा 2 जी सब इसमें एक्स भी बटा एच क्यू क्वेश्चन में 2 पाई एम के टी के खाते 3 बटा 2 के टी इंटू 4/3 अंडर रूट में पाई 0 टू इन्फिनिटी एक्स खाते 3 बटा 2 डी एक्स बटा ई खाते अल्फा प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 बटा 2 जी सब इसमें एक्स भी बटा एच क्यू क्वेश्चन में 2 पाई एम के टी के खाते 3 बटा 2 के टी f2 अल्फा 12 f2 अल्फा इक्वल टू 4/3 अंडर रूट पाई 0 टू इन्फिनिटी एक्स खाते 3 बटा 2 डी एक्स बटा ई खाते अल्फा प्लस एक्स प्लस 1 द इंटीग्रेशन f1 of alpha and f2 of alpha should be evaluated of both positive and negative value of alpha at 0 K temperature. The maximum attainable energy is epsilon sub इसमें f of 0 therefore n equal to 0 to e epsilon of f d n epsilon equal to g sub इसमें f 4 pi एम भी बटा के एच क्यू अंडर रूट में 2m 0 टू ई सब इसमें आप 0 एप्सिलॉन खाते 1/2 डी एप्सिलॉन इसको जी सब इसमें 4 पाई एम भी बटा के एच क्यू अंडर रूट में 2m इंटू 2 बटा के 3 ई सब इसमें आप 0 घटे 3 बटा 2 या फिर आप 0 इसको एच स्क्वायर बटा के 2m क्वेश्चन में 3n बटा के 4 पाई भी जी सब इसमें घटे 2 बटा 3 14 दिस इज द वैल्यू ऑफ हर्बी एनर्जी फॉर द गैस एट 0 के all the states up to this energy will be completely filled. The electron and proton are particle with 1/2 spin for them. This is equal to 2s plus 1 equal to 2. Therefore, in every state there can be two particle with plus 1/2 and minus 1/2 spin. For the figure 8, it is clear that even at absolute 0 of temperature 0 के the particle like electron, proton, etc. having sufficient energy which should have been 0. According to the classical theory, on increasing the temperature, the distribution is represented by the dotted lines, and the energy of some particle becomes more than is epsilon sub इसमें अब the Fermi temperature of a system is defined as T sub इसमें अब इसको epsilon sub इसमें आप 0 बटा के इक्वल टू m h स्क्वायर बटा 2m के क्वेश्चन में 3n बटा के 4 पाई भी जी सब इसमें s कहते 2 बटा 3 15 डेजेरेंसी केस फर्स्ट वीक डेजेरेंसी व्हेन टी ग्रेटर देन टी सब इसमें ऑफ आर्ट के टी ग्रेटर देन सब इसमें ऑफ 0 इन द केस ऑफ डेजेरेंसी ऑफ द फर्मी गैस इज वीक एंड ए इज लेस देन 1 एंड अल्फा इज पॉजिटिव अंडर दिस कंडीशन f1 ऑफ अल्फा इज टू a माइनस a स्क्वायर बटा 2 3 बटा 2 प्लस a क्यू बटा 3 घटे 3 बटा 2 प्लस डाटा 16 f2 ऑफ अल्फा इज टू a माइनस a स्क्वायर बटा 2 के खाते 5 बटा 2 प्लस a क्यू बटा 2 3 घटे 5 बटा 2 प्लस डाटा 17 पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 10 एंड 12 वी गेट n इक्वल टू जी सब इसमें भी बटा गया एच क्यू क्वेश्चन में 2 पाई एम के टी के खाते 3 बटा 2 क्वेश्चन में a माइनस a स्क्वायर बटा 2 खाते 3 बटा 2 प्लस a क्यू बटा 3 खाते 3 बटा 2 प्लस डाटा 18 इक्वल टू जी सब इसमें भी बटा गया एच क्यू क्वेश्चन में 2 पाई एम के टी के खाते 3 बटा 2 क्वेश्चन में a माइनस a स्क्वायर बटा 2 खाते 5 बटा 2 प्लस a क्यू बटा 3 खाते 5 बटा 2 प्लस डाटा 19 and dividing equation 19 and 18 and solving approximation we get equal to 3 बटा 2 n के टी क्वेश्चन में 1 प्लस a बटा के 2 खाते 5 बटा 2 प्लस डाटा अप्रोक्स 20 at the first approximation is equal to 3 बटा 2 n के टी 21 this value match with the classical value of our energy of a monotonic ideal gas. Thus for t is greater than t sub इसमें and the derivative of Fermi gas from the behavior of an ideal gas is very small and the degeneracy is very weak. Case number 2 strong degeneracy when alpha is very small large and negative then a is greater than 1 the degeneracy becomes too strong. This happens when the temperature is low and the density of particle is high. Under this condition the solution of the function f1 of alpha and f2 of alpha become ds in the first approximation is equal to 1 upon g sub s into n बटा के v into h q बटा 2 पाई m के t के खाते 3 बटा 2 22 at t equal to 0 के absolute 0 of temperature a tends to infinity and the Fermi gas becomes totally degenerate of epsilon equal to 1 बटा के e खाते epsilon minus e sub इसमें आप क्वेश्चन 1 बटा के t plus 1 equal to 1 if 0 is less than or equal epsilon is less than or equal e sub इसमें आप 0 equal to 0 if epsilon is less than e sub इसमें आप 0 n equal to g sub इसमें 4 पाई m भी बटा के एच क्यू अंडर रूट में 2m एप्सिलॉन खाते 1/2 डी एप्सिलॉन इज इफ 0 इज लेस देन और इक्वल एप्सिलॉन इज लेस देन इस इसमें आप 0 इक्वल टू 0 इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इस इसमें आप 0 वेयर इस इसमें आप 0 इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन 14
the total energy of the Fermi gas absolute zero temperature 0 point of energy Fermi gas E sub इसमें 0 छोड़ो 0 to E sub इसमें आप एप्सिलॉन n छोड़ो G sub इसमें आप 4 pi mv बटा के HQ अंडर रूट में 2m 0 to E sub इसमें आप 0 एप्सिलॉन का 3 बटा 2 d एप्सिलॉन छोड़ो 2 बटा के 5 G sub इसमें आप क्वेश्चन में 4 pi mv बटा के HQ अंडर रूट में 2m E sub इसमें आप 0 खाते 5 बटा 2 23 and putting the value of E sub इसमें आप 0 फ्रॉम इक्वेशन 14 वी गेट ई नॉट छोड़ो 3n एच स्क्वायर बटा के 10m क्वेश्चन में 3x बटा के 4 पाई भी जी सब इसमें याद के खाते 2 बटा 3 इसको 3 बटा के 5 n एप्सिलॉन सब इसमें आप 0 24 ऑन इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन द प्रोटॉन जी सब इसमें इसको 2 देयरफॉर इज नॉट इसको 3n एच स्क्वायर बटा के 40 खाते m 3n बटा के पाई भी खाते 2 बटा 3 25 देयरफॉर एट 0 के द प्रेशर ऑफ फर्मी गैस लेवल विल बी पी नॉट इसको 2 ई नॉट बटा 3 बी इसको एन एच स्क्वायर बटा 5 एम भी क्वेश्चन 1 3n बटा के 4 पाई भी जी सब इसमें कहते 2 बटा 3 26 दस स्ट्रांगली डिजनरेट फर्मी गैस डज नॉट exert pressure even at 0 K temperature. This result for Fermi gas is contrary to the for the classical gas or Bose-Einstein gas, for which the 0 point pressure, the pressure is 0 K in 0 electron gas. According to the electronics structure of matter, the metals consist of a very large number of improbable positive ions arranged in the form of a lattice, and a large number of electrons which roams about freely inside the metal. These are called the free electron. In the fact are the valency electron which becomes free due to the bond formation in metal. These electrons are free to move anywhere inside the metal, but are not free to come out the metal boundaries. Inside the metals, the free electrons behave like the molecules of a gas. They execute random motion due to the thermal states of the metals. They collide with each other, and the ion is the lattice. The collision of a perfectly elastic disassemble of free electron is a metal is called electron gas. Meaning of the physics property of metal of a electric and thermal conductivity. The thermic emission photoelectric effect can be successfully explained on the basis of free electron theory. In 1928, Sommerfeld modified the free electron theory in the background of quantum statistics. According to him, the electrons in the metal are not totally free. They are only partially free. The inner region of the metal may be regarded as the region of positive potential. Therefore, some work has to be done to take the electrons out of metal surface. Therefore, the electrons in metal cannot be compared directly with the molecules of gas. Also, the mass of the electron is extremely small, but their particle density is the metal is very large. Therefore, the electrons gas is highly compressed gas with a regenerate. Also, moreover, the electrons obey Pauli exclusion principle, and hence Fermi-Dirac statistics is applicable to them. Since S is equal to 1/2 for the electron, therefore G is equal to 2. Therefore, from equation 14 1 at 0 K temperature, the Fermi energy of the electrons in metal is इस सब इसमें पहले सब इसमें इसको एच स्क्वायर बटा 2m क्वेश्चन में 3n बटा के 4 पाई भी इंटू 2 खाते 2 बटा 3 इसको टू एच स्क्वायर बटा के 8m क्वेश्चन में 3n बटा के पाई भी खाते 2 बटा 3 इसको 39 रो खाते 2 बटा 3 ई भी द एंड द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रो इक्वल टू mn बटा के भी 0.1 kg प्रति मीटर क्यूब. Therefore, the Fermi temperature for electron gas is T सब इसमें आप इक्वल टू एप्सिलॉन सब इसमें आप 0 बटा के 10⁵ के बिलो 10⁵ के temperature the electron gas will be degenerate as in second 15.2 on the solving in the limit t tends to 0. The degeneracy coefficient for electron gas is a equal to h square बटा 2 mkt. क्वेश्चन में 3n बटा के 8 पाई भी कहते 2 बटा 3. On putting the value of various quantity and solving, we get a equal to 4.56 10⁵ 5 बटा t. Thus the low temperature the electron gas is very strongly degenerate. The 0 points energy for electron gas इक्वेशन 15 of second ई नॉट इक्वल टू 3n एच स्क्वायर बटा 40m क्वेश्चन में 3n बटा के पाई भी कहते 2 बटा 3 इक्वल टू 3 बटा के 5 इस सब इसमें आप इसको 0 अब 0 एंड द 0 पॉइंट प्रेशर इक्वेशन 26 अब सेकंड 15 इज पी नॉट इक्वल n एच स्क्वायर बटा 30m भी
क्वेश्चन में 3n बटा के पाई भी कहते 2/3 एट द नॉर्मल टेम्परेचर द प्रेशर एंड इलेक्ट्रॉन गैस इन ऑफ ऑर्डर 10 कहते 5 एटमॉस्फेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस टुवर्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज ई सब इसमें भी क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन डेभा ई बटा डेभा टी भी इक्वल टू 1/2 एन के पाई स्क्वायर क्वेश्चन में के टी बटा के सब इसमें एफ आप 0 वेयर लैम्डा इक्वल एन के स्क्वायर पाई स्क्वायर बटा के टू एप्सिलॉन इसमें एफ आप 0 कांस्टेंट सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोपोर्शनल टू टी दस द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस टुवर्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विच बिकम्स 0 एंड एब्सोल्यूट 0 आफ्टर टेम्परेचर. A predicts probability concept of probability if a system constant of a very larger number of particles then the one concept cannot say definitely about the behavior of an individual particle. We can just imagine about its behavior. The concept of probability is helpful in the thinking of the behavior in a more correct form. For example, if the coin is tossed, we know that either is heads or tail may comes. If the coins is tossed several times, in the some case the heads will come up while in the other tails will come up in a single toss. It is not possible predict where the heads or tails will come up. It is natural to ask in the many tasks how many times the heads will come up. If it's our common experiment in several tossing of a coin, almost half time the head come up and so also the tail. Therefore, we say that the chance of head coming up in a toss is 1/2. If this term chance is given the name probability in statistics, it is a fractional number. The experiment are happening like tossing of a coin or drawing a card from the peak etc. card the event. The in statistics probability of an event defined as the probability of an event is equal to the ratio of the number of favorable event to the total of equally likely way are happening of that event. Thus, probability of event is equal to number of favorable event but total number of likely event. Thus, in an experiment is repeated n times and a certain event a observed n suffix में times, then the probability of happens in a event is p suffix में equal to n suffix में a बटा के n. Equation number 1. It may be remembered that the above definition of probability is true only when the total number of happening is large n tends to infinity. Therefore, the above definition may be expressed as p suffix में equal to limit n tends to infinity n suffix में a बटा के n. Do now if an event can take place in a way cannot be happen b way, then the total number of way or event is a plus b. Is the probability of occurrence of the event is p equal to a बटा के a plus b. Equation number 3. And the probability of its non-occurrence is q equal to b बटा के a plus b. समीकरण नंबर 4. Here it is assumed that the likelihood of occurrence of a and or b are equal. A or b are equally like to happen. The sum of two probability will be a 1 because sometimes out of a or b defined to happen. The numerical value of probability is always fractional. 0 is less than p is less than 1. P is equal to 1 means that definiteness of occurrence of event. If p is equal to 1, it means that the event will occur definitely. On the other hand, p is equal to 0 express the impossibility of occurrence of the event. P is equal to 0, the event will be never take place. Probability theorem or relation. There are two important relations also called probability theorem. These are addition theorem or probability of mutual exclusive event. If an experiment there are two mutual exclusive event R and S and the probability of occurrence of event R is P of R and that of events is P of S, then the probability of occurrence of the R S is P क्वेश्चन में R S इक्वल टू P of R प्लस P of S. समीकरण नंबर 5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट इज द इक्वल टू द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ आइदर इवेंट नोट by terms mutually exclusive events. The means such the events in which if one event occur then the other cannot happen. For example, if the tossing of a coin is heads come up then the tails not come up and vice versa. Therefore, these are mutually exclusive event. Proof: if a system
two events R and S are possible, and in a experiment n suffix में R system exhibit the result R and n suffix में S system exhibit the result yes, then the number of system exhibit the result R yes in n suffix में R plus n suffix में S and result are mutually exclusive. Therefore the probability of occurrence of result n R S is P question में R S is equal to number of system showing the result R S बटा total number of system is equal to n suffix में R plus n suffix में S बटा के n suffix में R बटा के n plus n suffix में S बटा के n but n suffix में R बटा के n is equal to PR and n suffix में S बटा के n P और S is equal to P suffix में R plus P suffix में S 6. This proves the addition theorem of probability in the event several result 1, 2, 3 are possible. P of 1 or 2 n P of 1 plus P of 2 plus P suffix में n. 7. Consider a constituting of very large number of n similar subtypes on the performing an experiment of the system n types result are possible. We may have 1, 2, 3 n there result are mutually exclusive. Suppose n1 subsystem exhibit the result 1, n2 subsystem exhibit the result 2 and n subsystem exhibit the result n. Then since there are mutually exclusive event, we can write n1 plus n2 plus n3 plus n subsystem n is equal to n dividing n बटा के n plus n2 बटा के n plus n3 बटा के n plus n subsystem n बटा के n is equal to 1. By definition n subsystem I बटा के n is equal to P of I, the probability of occurrence of result I. Therefore P of 1 plus P of 2 plus P of 3 plus P of n is equal to 1. I is equal to 1 to n. P of I is equal to 1. 8. The sum of the probability of occurrence are mutually exclusive events in one. This is also called normally condition of probability. दूसरा multiplication theorem of probability composite event. If P of R and P of S are the probability of two composite events R and S occurring separately, then the probability of their simultaneous occurrence P question में R, S is equal to P of R into P of S. The probability of composite event is equal to the product of probability of their event considered separately. The event are said to be composite if the occurrence of one depends upon the occurrence of the other, vice versa. For example, on drawing a card from a pack of 52 cards, the card is shaped in one event and its is ice S in another event, but the card is S of spread in composite event. Proof: consider the system consisting n subsystem. On performing the experiment, the system can be exhibit two types of different result R and S. Their result are composite if n suffix में R S is the number of system and that exhibit both the events R and S simultaneously. Then the probability of their composite event P question में R, S is equal to n suffix में R S बटा के n. Now considering the event R and S separately but out of n system, then n suffix में R be the number of system exhibit the event R and n suffix में S be the number of exhibit the system event S. Therefore the probability of P of R बराबर n suffix में R बटा के n and P of S n suffix में S बटा के n. Now consider the event jointly. The probability of occurrence of the event is P of S. Now if n suffix में R is the number of system exhibit the event R, then the fraction n suffix में R P of S of the system will be so the event is yes also. Therefore the number of system exhibit both the event R and S simultaneously n suffix में R S is equal to n suffix में R P of S. Thus therefore the probability of observing the result R and S simultaneously P question में R, S is equal to n suffix में R S बटा के n is equal to n suffix में R P of S बटा के n is equal to n suffix में R बटा के n into P of S. P question में R, S is equal to P of R, P of S. 11. This is proof that the theorem multiplication of probability in the event 1, 2, n exhibit by system then composite probability 1, 2, 3 P of 1, P of 2, P of 3, P of n. 12. Calculate the probability tossing of one coin. There are two face, heads and tails of the coin. If a coin in tosses, either the heads or tails make up. Usually the chance are head up or tail coming up equal. An experiment it is found that if a coin is tossed a number of times, almost times of heads come up and almost times half a time tail up come up. Therefore probability either head
are tens coming up equal to n by 2 बटा n equal to 1 by 2 tossing up to coin. In the case there are two possibilities. The coin are unlike are distributable. B, the coins are similarly indistinguishable. Case 1. To make coins. Suppose the two makes coins are unlike distributable. They can be differentiated from the one another. These coins are tossed simultaneously several times. Let A1 and B1 respectively represent the number of times the heads and tails of coin 1 come up, while A2 and B2 respectively represent the number of times the heads and the tails of the two comes. Then there are four possible events that can occur. Heads of both coins and of A1 A2. दूसरा the heads of coin 1 and tails of coin 2 is of A1 B2. The tails of coin 1 and heads of coin 2 is of B1 A2. Tails of both coins of B1 B2. Then the total possible event is equal to A1 A2 plus A1 B2 plus A1 B1 A2 plus B1 B2 is equal to A1 B1 equation A2 plus B2 1. Because all events independent each other, probability of event will be 1 by 4. Total in event n is equal to 4. Type of once event m is equal to 1. Probability of event m is equal to m bata n is equal to 1 by 4. This may be also understood as follow. Suppose the heads of both coins come, the probability of heads of coin 1 coming is equal to 1 by 2. Similarly, the probability of head of two coin coming up is equal to 1 by 2. Because this is the composite event consisting of two independent events, the probability will be equal to 1 by 2. 1 by 2 is equal to 1 by 4. Case 2. The two similar coins. Suppose the two coins are similar, cannot be disguised from one another. In case let A1 is equal to A2 is equal to A, B1 is equal to B2 is equal to B. Since the coins are indistinguishable, the events AB and BA cannot be differentiable from one another. Therefore, the only possible events are A square comma AB plus and B square. Thus, total event A1 plus B1 question में दूसरे क्वेश्चन में A2 plus B2 is equal to A plus B is equal to A square plus B2AB plus B square. Do obviously the probability of both heads or tails coming up will be 1 by 4 each, and the probability of heads and one tails coming up will be 2 × 4 बराबर 1 बटा 2 3. Tossing the three like coins. Let us now consider the case of tossing of three like or distinguishable coin. Let alpha 1 comma A2 comma B3 represent the getting the heads of the three coins up, and B1 comma B2 comma B3 the way getting the tails of the three coins up. Now if the three coins are tossed simultaneously, there are 8 possible combinations where these are A1 comma A2 comma A3, A1 comma A2 B3, A1 comma B2 comma A3, A1 comma B2 comma B3, A1 B1 comma A2 comma A3, B1 comma A2 comma B3, B1 comma B2 comma A3 and B1 comma B2 comma B3. Thus the total number A1 A2 B3 plus A1 A2 B3 plus A1 B2 A3 plus A1 B2 B2 plus B1 A2 A3 plus B1 A2 B3 plus B1 B2 A3 plus B1 B2 B3 is equal to B1 A1 plus B1. दूसरे क्वेश्चन में A2 plus B2 plus A3 plus B3. 3 are the probability of occurrence of either event will be 1 by 2 × 1 by 2 × 1 by 2 is equal to 1 by 8. Tossing the three similar coins. If three coins being tossed as similar, let A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A, B1 is equal to B2 is equal to B3 is equal to B. Then in the tossing coins, number of the times possible combination of AQ comma A square B comma AB square and BQ at the total number of A will be total A plus B. दूसरे क्वेश्चन में A plus B is equal to A plus B का होल क्यू A is equal to AQ plus 3A square B plus 3A B square plus BQ. 3 4 obviously in the case of probability of obtain 3 heads or 3 tails of is 1 by 8, while the probability of observing 2 heads and 1 tails of 1 heads and 2 tails of is 3 × 1 बटा 8 is equal to 3 बटा 8. Tossing coin n. Rejecting the argument given above, we conclude that if n indistinguishable or like coin are tossing simultaneously, a number of total number of events A1 plus B1 दूसरे क्वेश्चन में A2 plus B2 plus A sub n plus B sub n, but the coin similar A1 is equal to A2 plus A3 is equal to A sub n is equal to A same, B1 is equal to B2 is equal to B3 is equal to B sub n is equal to B same. Total way is equal to A plus B A plus B is equal to n times is equal to A plus B के साथ n. 5 this
कैन बी एक्सपेंडेड बाइनोमियली, thus द नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू ए प्लस बी के घाते n इज इक्वल टू ए घाते n प्लस बी ए के घाते n माइनस वन बी प्लस n माइनस वन बटा के 2 फैक्टोरियल ए घाते n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस डाटा n क्वेश्चन n माइनस वन n माइनस टू n माइनस आर प्लस वन बटा के फैक्टोरियल ए घाते n माइनस आर बी घाते आर प्लस डाटा प्लस बी घाते n इज इक्वल टू ए घाते n प्लस n सी वन ए घाते n माइनस वन बी प्लस n सी टू ए घाते n माइनस टू बी स्क्वायर प्लस डाटा प्लस n सी आर ए घाते n माइनस आर बी घाते आर प्लस डाटा प्लस बी घाते n टोटली वे इक्वल टू आर बराबर 0 टू n सी आर ए घाते आर बी घाते n माइनस आर 6 दिस if the above expression the total number of terms which indicates the total number of possible wave is equal to summation ncr is equal to 2 घाते n star the total combination of r n plus 1 therefore the probability of combination a घाते r b घाते n minus r is p क्वेश्चन में n comma n minus r is equal to ncr बटा के summation ncr is equal to 1/2 घाते n ncr p of r comma n minus r is equal to 1/2 घाते n into n फैक्टोरियल बटा के r फैक्टोरियल क्वेश्चन में n minus r फैक्टोरियल 8 combination having maximum probability if n similar coins are tossed a number of times the total number of possible combination is n plus 1 and the total number of wave is 2 घाते n the probability of containing r heads of a and n minus r tails of b p क्वेश्चन में r कामा n माइनस आर इक्वल टू 1/2 घाते n सी आर इक्वल टू 1/2 घाते n इंटू n फैक्टोरियल बटा के r फैक्टोरियल क्वेश्चन में n माइनस आर फैक्टोरियल फ्रॉम द थ्योरी ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इट कैन बी प्रूव दैट दिस टर्म n सी आर विल have maximum value if r is equal to n/2 therefore maximum possible probable distribution will be n/2 comma n/2 and the maximum probability is p सफिशिएंट मैच p क्वेश्चन में n/2 comma n/2 इक्वल टू 1/2 घाते n फैक्टोरियल बटा के n/2 फैक्टोरियल इंटू n/2 फैक्टोरियल p सफिशिएंट मैच इक्वल टू 1/2 घाते n फैक्टोरियल बटा के n/2 का फैक्टोरियल होल स्क्वायर नाउ इफ द नंबर ऑफ कॉइन इज इवन देयर will be only one value n/2 for which the probability will be maximum will be only one probable state or distribution but if the value of n is odd therefore will be combination n minus 1 बटा 2 n plus 1 बटा 2 and n plus 1 बटा 2 comma n minus 1 बटा 2 for which the probability will be maximum or in other words there is one to probable distribution combination having minimum probability we know that the value of NCR will be minimum where r is equal to 0 and r is equal to n then r is equal to 0 then p सफिशिएंट mean is equal to p of 0 comma n is equal to 1/2 घाते n nc 0 is equal to 1/2 घाते n फैक्टोरियल बटा 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल is equal to 1/2 घाते n then r is equal to n p सफिशिएंट mean is equal to p of n comma 0 is equal to 1/2 घाते n ncn is equal to 1/2 घाते n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल is equal to 1/2 घाते n the probability of either case is same hence p minimum is equal to 1/2 घाते n thus probability with weightage till now we have considered only the those case is the probability of happening or not happening were equal from example is if a coin tossed the probability of either heads or tails coming up were equal or heads or tails of come up with equal probability but generally all the event are not this type this is possible of happening if a event different from the not happening from example a dice has 6 face mark 1 comma 2 comma 3 comma 4 otherwise the all faces similar if such a dice is tossed the probability at any face coming up equal and equal 1/6 therefore the probability of particle mark face not coming up is 5 × 1/6 equal to 5/6 in such dice toss number of times in the natural to ask as how many times a particularity marks the face will come up such events are known as the case with weightiness suppose it is a single trial probability of occurrence of a particular event is a and that is non-occurrence is b equal to 1 minus a assuming that the event of r independence in a number of n probability occurrence r times that the non-occurrence n minus r times can be determined using the theorem of probability of components event a comma गुड़े r times b गुड़े n minus r times a equal to a घाते r b घाते n minus r but the number of wave happening and invert r times and not happening n minus r times is n c सफिशिएंट में r therefore n is trial probability of n favorite p क्वेश्चन में r comma n minus r equal to n c r a घाते r b घाते n minus r 11 n c r equal to n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल क्वेश्चन में n minus r फैक्टोरियल
पी ऑफ एन आर कामा एन माइनस आर इसको एन फैक्टोरियल बटा के आर क्वेश्चन में एन माइनस आर फैक्टोरियल एक खाते एन बी खाते एन माइनस आर 12 ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट occurring 0,1,2,3 डाटा एन टाइम्स रिस्पेक्टिवली ए बी खाते एन एन सी 1 ए बी खाते एन माइनस 1 एन सी 2 ए 2 बी खाते एन माइनस 2 एन सी 3 ए खाते 3 बी खाते एन माइनस 3 डाटा एन सी एन ए खाते एन इन द फैक्ट ऑफ दिस सक्सेसिव टर्म्स बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म्स बी प्लस ए खाते एन ई बी प्लस ए खाते एन इसको एन सी 0 ए खाते 0 बी खाते एन प्लस एन सी 1 ए बी खाते एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 ए स्क्वायर बी खाते एन माइनस 2 प्लस डाटा एन सी आर ए खाते आर एन माइनस आर प्लस एन सी एन ए खाते एन बी खाते 0 13 इन टर्म ऑफ एन सी आर ए खाते आर बी खाते एन माइनस आर इज द आर प्लस 1 terms binomial expression. Thus we conclude that in case weightage less in n trials of probability of occurrence of event r times in the equal r plus 1 terms of the binomial expression plus b plus a खाते n if is y the type of probability distribution in sometimes known binomial distribution. Obviously if the probability of happening or not happening of the event are equal to the equal probable, then a equal to b equal to 1 by 2 in the case p question में r comma n minus r equal to n c r equal to 1 by 2 खाते r n minus m 2 खाते n minus r equal to n c r गुणा 2 खाते n 14 which is the formula of already above distribution. Example 1, a coin is tossed 5 times. What is probability of getting 3 times heads and 2 times tails up? Solution, the number of attempts n equal to 5 3 times heads up and 2 times tails up means r equal to 3 and n minus r equal to 5 minus 3 equal to 2. Therefore the probability of distribution 3,2 p of 3,2 equal to 1 by 2 खाते 5 5 c3 equal to 1 बटा 2 खाते 5 गुणे 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल equal to 1 बटा 2 खाते 5 equal to 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटा 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 equal to 10 बटा 32 equal to 5 बटा 16. Example 2, a coin is tossed 10 times. Calculate the probability of heads coming up in all cases. दूसरा 5 times heads and 5 times tail coming up. तीसरा 3 times head coming up, 7 times tails coming up. चौथा 7 times heads and 3 times tails coming up. Maximum probable combination and minimum probable combination. Solution, if a coin is dozen times the probability of heads coming up r p of r equal to p question में r comma n minus r equal to 1 बटा 2 खाते हैं into r factor बटा r factor question में n minus r factor heads of coming up r का यानी equal to 10 r equal to 10 n minus r equal to 0 p of 10 comma 0 equal to 1 बटा 2 खाते 10 गुणे 10 factor बटा 10 0 factor equal to 1 बटा 2 खाते 10 equal to 1 बटा 124. दूसरा 5 टाइम्स हेड कमिंग अप यानी इसको 10 आर इसको 5 एन माइनस आर इसको 5 पी क्वेश्चन में 5,5 इसको 1 बटा 2 का 10 गुणे 10 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 बटा 10 24 गुणे 252 इसको 1 बटा 256 3 टाइम्स हेड कमिंग अप यानी इसको 10 आर इसको 3 एन माइनस आर इसको 7 पी आप 3 का 7 इसको 1 बटा 2 खाते 10 फैक्टोरियल बटा 3 खाते 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 10 24 गुणे 120 इसको 15 बटा 128. चौथा 7 टाइम्स हेड कमिंग अप यानी इसको 10 आर इसको 7 एन माइनस आर इसको 3 पी क्वेश्चन में 7 का 3 इसको 1 बटा 2 कहते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 10 24 गुणे 120 इसको 15 बटा 128 फॉर मैक्सिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आर इसको n by 2 इसको 10 बटा 2 इसको 5 पी सबसे मैक्स इसको पी क्वेश्चन में 5 का 5 इसको 1 बटा 2 कहते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इसको 63 बटा 256 फॉर मिनिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आर इसको 0 एंड 10 पी सब इसमें मीन इसको 1 बटा 2 खाते 10 फैक्टोरियल बटा 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 10 24. एग्जांपल 3, 8 सिमिलर कॉइन्स आर टास्ड सिमुलेटेनियसली. कैलकुलेट द प्रोबेबल ऑफ 5 हेड्स कमिंग अप. दूसरा मैक्सिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. दूसरा तीसरा मैक्सिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन. सॉल्यूशन इन द टॉसिंग ऑफ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हेड्स कमिंग अप पी ऑफ आर इसको 1 बटा 2 खाते हैं इंटू एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. पहला 5 हेड्स अप एन इसको 8 आर इसको 5 एन माइनस आर इसको 3 पी आप 5 इसको 1 बटा 2 खाते 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 256 इसको 56 बराबर 7 बटा 32. दूसरा फार द मैक्सिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आर इसको 1 by 2 इसको 4 चूंकि एन माइनस आर इसको 4 पी सर्विस में इसको 1 बटा 2 खाते 8 इंटू 8 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इसको 25 बटा 128. तीसरा फार मिनिमम प्रोबेबल कॉम्बिनेशन आर इसको एन आर इसको 0 पी सर्विस में इसको 1 बटा 2 खाते 8 इंटू 8 फैक्टोरियल बटा 8 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 256. चौथा 7 टाइम्स हेड्स एंड 3 टाइम टेल अप आर इसको 7 एन माइनस आर इसको 3 पी ऑफ 7 इसको 1 बटा 2 खाते 10 इसको 10 बटा फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 बटा 124 10 24 720 720 बटा 10 24 1 टाइम्स हेड अप एंड 9 टाइम्स टेल अप आर इसको 1 एन माइनस आर इसको 9 पी ऑफ 1 इसको 1 बटा 2 खाते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इसको 1 बटा 10 24 10
10 बटा 10 24। एग्जाम्पल आर द 10 पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इनटू सिमिलर बॉक्सेस, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,7 डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3,7 एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। पांचवा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। छठवां नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग 3,7 डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर कामा एन माइनस आर इज द टू सिमिलर बॉक्सेस। पी क्वेश्चन में आर कामा एन माइनस आर इक्वल टू 1/2 घटे एन, सी आर इक्वल टू 1/2 घटे एन इंटू एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल। क्वेश्चन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। हियर एन इक्वल टू 10। एग्जाम्पल 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3,7 पी ऑफ 3,7 इक्वल टू 1/2 घाते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/10 24 गुणे 120 इक्वल टू 120 बटा 10 24। फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल टू n/2 इक्वल टू 5 पी मैक्स इक्वल टू पी कामा 5,5 इक्वल टू 1/2 घाते 10 इंटू 10 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/10 24 गुणे 252 इक्वल टू 252 बटा 10 24। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3,7 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आर ऑफ पी क्वेश्चन में 3,7 बटा पी मैक्स इसको 20 बटा 10 24 बटा के 52 बटा के 10 24 इसको 120 बटा 252 इसको 10 बटा के 21। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेज एन +1 10 + 1 इसको 11। दिस माइक्रो स्टेज आर 10,0 9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 1,9 एंड 0,10। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेज 2 कहते हैं इसको 2 कहते 10 10 24। द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेज करस्पॉन्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन 3,7 ओम 3,7 इसको 10 C3 10 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इसको 120। एग्जाम्पल 9 12 पार्टिकल आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बॉक्सेस ए एंड बी आर इक्वल प्रोबेबिलिटी रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 8,4 6,6 एंड 12,0। द सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर कामा एन माइनस आर पी ऑफ आर कामा एन माइनस आर इक्वल 1/2 घाते एन फैक्टोरियल बटा एन फैक्टोरियल क्वेश्चन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। हियर एन इक्वल 12 बार डिस्ट्रीब्यूशन 8,4 इक्वल टू पी ऑफ 8,4 इक्वल 1/2 घाते 12 इंटू 12 फैक्टोरियल बटा के 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 495 गुणे 2 घाते -12 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 6,6 यानी इक्वल 12 आर इक्वल 6 एन माइनस आर इक्वल 6 पी ऑफ क्वेश्चन में 6 - 6 इक्वल 1/2 करते 12 गुणे 12 बटा 6 इक्वल 924 गुणे 10 -12 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 12,0 यानी इक्वल 12 आर इक्वल 12 एन माइनस आर इक्वल 12 पी ऑफ 12,0 इक्वल 1/2 घाते 12 गुणे 12 फैक्टोरियल बटा 16 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इक्वल 2 घाते -12। एग्जांपल 10 टू सिमिलर डाइस मार्क 1 to 6 ऑन देयर फेसेस आर थ्रोली सिमुलटेनियस। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन द टॉप डाइस and 6 on the other solution. The first dice can fall in the 6th way in any 6 digit 1 to 6 can come up and the probability of getting any digit up in 1/6. Therefore the probability of getting 5 or 6 up from addition theorem P1 is equal to 2 गुणे 1/6 equal to 2/6. For the second dice also the probability of getting any digit up is 1/6 if digit 5 is obtained one dice there must be obtained 6 in the other. If the 6 is obtained in one dice we must obtain 5 in the other. Therefore the in the second dice the probability of obtaining 5 or 6 which are 1 is not obtained in first. P2 is equal to 1/6. Therefore the probability of obtaining 5 in the one dice and 6 is other. P is equal to P1 P2 equal to 2/6 गुणे 1/6 equal to 18। एग्जाम्पल 11 the tossing of a coin probability up if the coins इतना बंद कर दो यार।